Hello everyone, welcome to Learn with Wasim. This is Muhammad Wasim Khan, an instructor of your project planning and management course. I hope you all are doing well. As you know that we have already discussed some of the important topics from lesson number 4 regarding the project integration management. We have already discussed the project integration management, how to develop the project charter, and how to develop project management plan. We have discussed and defined the project integration management and the processes that are involved in the project integration management. After that, we have discussed how to develop the project charter. We have defined it, and we have already discussed, the most important points regarding the project charter development in brief details. As you know that we had inputs, outputs, and the tools and techniques for the project charter development process. And we have discussed, all of the inputs, the tools and techniques, and at the end, the project charter is an output. Now, in the previous class, we have discussed how to develop the project management plan. We have already defined that project management plan is actually a process of defining, preparing, and coordinating all the subsidiary plans from different knowledge areas and integrating them into a comprehensive project management plan. And the benefit of this process is that at the end we will have a single central project management plan for the whole project. We have also discussed the inputs such as project charter, outputs from other processes, enterprise environmental factors, and organizational process assets. Then we have discussed the tools and techniques through which we can transform these inputs into outputs. And those tools and techniques were expert judgment and some facilitation techniques. And at the end, we have got the project management plan as an output. We have already discussed that along with project management plan, which is a primary document, we can have some other documents as well that you can see on the screen. Today we are going toward the third step or process in a project integration management, and that is called direct and manage project work. So let's define how to direct and manage work project and what is its definition. It is the process of performing the work which is defined in the project management plan to achieve the project's objectives. So जो हम project management plan के दौरान जो project के objectives है वो हमने जो define किए होते हैं उसमें हमने ये भी बताया होता है उस project management plan में कि आप इस work को किस तरह execute करेंगे या जो processes है उसको किस तरह perform करेंगे. तो वो जो वर्क है उसको एग्जीक्यूट करना और उसको परफॉर्म करना जो कि हमने प्लान किया था वो हम डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में करते हैं. यानी इस स्टेप में हम जो भी कुछ हमने प्लान किया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में उसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं. These activities include but are not limited to, we perform some activities such as we perform activities to accomplish the project objectives. In this process, we also create the project deliverables to meet the planned project work. So जो project work है उसको जो कि हमने plan किया है उसको perform करने के लिए हम project deliverables create करते हैं. Then we provide, train and manage the team members assigned to the project. यानी project के लिए
जो टीम मेंबर्स चाहिए उसको हम एक्वायर करते हैं, फिर उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं ताकि उस जो प्रोजेक्ट है और उसमें जो टास्क है उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग उनको दी जाए और उनको स्किल्स जो है वो प्रोवाइड की जाए, उनको उनकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव की जाए और उनको मैनेज किया जाए। Obtain, manage and use resources including materials, tools, equipment and facilities। एक और प्रोसेस जो हम यहाँ पे या एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं वो ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है लाइक मटेरियल, डिफरेंट टूल्स, इक्विपमेंट या फैसिलिटीज जो कि हम टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, उनको हम मैनेज करें। एंड देन इम्प्लीमेंट द प्लान मेथड्स एंड स्टैंडर्ड्स, यानी जो स्टैंडर्ड और जो मेथड्स या अप्रोच जो हमने प्लान किया था प्लानिंग प्रोसेस में, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे in this execution process, or we call it the direct and managed project work process as well. The next thing that we can do in this particular process is to establish and manage the project communication channels. Project communication, as I already mentioned in the previous classes, is one of the most important thing for coordination of one department or one project member with another project member of a project. So establishing the project communication and managing those project communication channels, is one of the activities in this particular process. Then generate work performance data. We have to generate the work performance data such as cost that we need for a particular project, the schedule or the time duration for particular activities or the whole project, and the technical and quality progress of the task of the project. Then another thing that is or another activity that is included in this particular process is issue change requests and implement approved changes. As you know that we have discussed that during execution, you may find some mistakes or some problems and that you would like to change in the planning process. So for that, you will have to request the change. Okay, you will have to issue the change request and implement the approved changes after analyzing those changes or problems. The next one is to manage risks and implement risk response activities. You may face some positive or negative risk during your processes. So here what you will do, you will actually try to manage those risks. You will try to enhance the positive risk or eradicate or reduce the rate of the negative risk. And you will have to identify a response to those risks कि उन risk को हम किस तरह response करें और फिर उसको implement भी करें उन responses को. The next one is to manage sellers and suppliers. यानी जो sellers है, जो suppliers है, जो कि आपको raw material provide कर रही है या जो आपको human resource, extra human resource, daily wages वगैरह भी provide कर रही है या और कोई आपको जो parts या products मिलते हैं, ठीक है, तो उन सप्लायर जिन सप्लायर्स की तरफ से मिलते हैं उन सप्लायर्स को आपने मैनेज करना होता है. देन मैनेज द स्टेक होल्डर्स एंड देयर एंगेजमेंट, यानी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं उनको आपने मैनेज करना है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो इंटरेस्ट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट और जो इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट जो है उसको आपने मैनेज करना होता है, उसको आपने बैलेंस करना होता है. And another one is to collect and document lessons learned and implement approved process improvement activities. Okay, during the process or during the undertaking of projects, you will learn some lessons at different stages. मुख्तलिफ stages पे आप जो है आप सबक मिलेगा आपको, आप बहुत कुछ learn करेंगे, गलतियों से सीखेंगे जो कि आगे आप परफॉर्म आप मतलब उसका आगे जो है एहतियात करेंगे कि वो गलतियां ना हो या वो प्रॉब्लम्स या वो जो रिस्क्स हैं उसको फ्यूचर में रिड्यूस किया जा सके. तो ऐसे लेसन्स आप लर्न करेंगे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट. तो
उन लेसन्स जो आपने लर्न की उसको कलेक्ट करना और उसको फिर डॉक्यूमेंट बनाना ताकि वो आगे जो है प्रोसेस इंप्रूवमेंट के फ्यूचर में आपके काम आ जाए. So these are some of the activities, not all the activities. These are some of the activities that are included in directing and managing the project work. Direct and manage project execution also requires implementation of approved changes. ठीक है, यानी अगर आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, तो दैट विल नीड टू इम्प्लीमेंट द अप्रूव्ड चेंजेस. जिस तरह मैंने आपको काफी दफा बताया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आते हैं और उन प्रॉब्लम्स को आपने फ्यूचर में उसको इरेडिकेट करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए आप कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ चेंजेस आप करना चाहते हैं, तो उन चेंजेस की आपने रिक्वेस्ट भेजनी होती है, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर उसके बेस पे जो है वो चेंजेस परफॉर्म होते हैं. तो चेंजेस जो परफॉर्म होते हैं या जो अप्रूव होते हैं वो तीन किस्म की होती है. या तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, ओके, yani in corrective action documented directions. Corrective actions are actually the documented directions to bring expected future performance in line with the project management plan. यानी आप जो है उसको करेक्ट करते हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स आए हैं उन प्रॉब्लम्स की जो फेस होने के बाद, जब आप वो फेस करते हो प्रॉब्लम्स को, उसके बाद आप उसकी करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, उन चीजों को ठीक कर देते हैं जो गलत है या जो खराब है. Then preventive actions is a documented direction to perform an activity that can reduce the probability of negative consequences. Preventive actions में आपको पहले से अंदाजा होता है काफी, ठीक है, based on or probabilities or something, कि यानी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ सकता है या कोई नेगेटिव कंसीक्वेंस इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का हो सकता है. तो उसके लिए फिर आप प्रिवेंटिव एक्शंस, पहले से प्रिवेंटिव एक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि वो नेगेटिव कंसीक्वेंस ना हो, वो नेगेटिव प्रॉब्लम्स जो है जो कि वो प्रॉब्लम जो कि आपके प्रोजेक्ट को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं वो वाकई ना हो. तो दैट्स व्हाई वी परफॉर्म द प्रिवेंटिव एक्शंस. एंड द थर्ड वन इज डिफेक्ट रिपेयर, the formally documented identification of a defect in a project component with a recommendation to either repair or replace the component. या आप ये करते हैं कि जो डिफेक्ट्स हैं उसको आप रिपेयर करें या उस कंपोनेंट को आप रिप्लेस करें. So these are different types of changes that you can approve, from the authorities, if you want to eradicate the problems. Okay, and like other processes for direct and managed project works, we have some tools and techniques and outputs. So let's discuss the inputs first. In inputs, we have the first thing is the project management plan, which we have already discussed. So I'm not going to discuss it here because we have already discussed it in the previous physical class in details. Let's move toward the second input, and that is the approved change requests. Approved change requests are an output of the output of the perform integrated change control process and include those requests reviewed and approved for implementation by the change control board. तो जिस तरह मैंने आपको I have already discussed in the previous lectures कि आप जब हमने इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल की, मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था कि आपने किस तरह इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल करना है या चेंज रिक्वेस्ट को किस तरह इम्प्रूव करना है, या अगर आपने चेंजेस करनी है प्लानिंग प्रोसेस या जो प्लान है उसमें चेंजेस करनी है तो किस तरह करनी है. तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसको हम अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस भी कह सकते हैं, कि जिसमें आप चेंजेस जो है आप अथॉरिटीज को जो है रिकमेंड करते हैं, वो उसको एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेते हैं कि वो चेंजेस जो है उसको इम्प्रूव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और ये सब एक कंट्रोल
change control board. The approved change request may be a corrective action, a preventive action, or a defect repair that we discussed on slide number 21, which was the previous slide. And the third and the fourth are the enterprise environmental factors. So the sum of the enterprise environmental factors that may affect your directing and managing project work process are organizational, company or customer's culture and structure, infrastructure of the facility, personnel and administration, stakeholder risk tolerances, project management information systems. So these are some of the environmental factors that may affect your execution process. And we have already discussed enterprise environmental factors, so we are not going into any detail. Organizational process assets that will include in this particular process are standardized guidelines, work instructions, communication requirements, issue and defect management procedures, and project files from the prior projects, mean project file from the previous similar processes projects. ठीक है, जो आपने पहले प्रोजेक्ट्स की हैं, जो कि आप इस जो करंट प्रोजेक्ट की सिमिलर है, तो वो जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स में आती है. Now let's move toward the tools and techniques. So we have discussed expert judgment. I have explained it with an example from my personal experience. So we are not going to explain it here. We are going to just go through some basic points here. So expert judgment is used to assess the inputs needed to direct and manage execution of the project management plan. This expertise is provided by the project manager and the project management team using specialized knowledge or training. Additional expertise is available from many resources, including other units within the organizations, consultants, stakeholders, including customers or sponsors, and professional and technical associations. Another one is the project management information system. The project management information system provides access to an automatic tool such as scheduling software tool, a configuration management system, an information collection and distribution system, or web interfaces to other online automated systems used during the direct and manage project execution effort. So the project management information system है, that provide access to automated tool, और वो automated tool जो है वहां तक आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, वो कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं. अगर आपने स्केजुलिंग करनी है तो वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं. अगर आप मैनेज करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं या आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखें तो हर एक के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होती है, ठीक है, और उसके थ्रू आप अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं. एंड वी कॉल इट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. The third tool or technique is meetings. Meetings are used to discuss and address pertinent topics of the project when directing and managing project work. तो अगर आपने प्रोजेक्ट वर्क को डायरेक्ट करना है, मैनेज करना है या एग्जीक्यूट करना है, so for that you will have to arrange meetings, ताकि उसमें आप जो मेन टॉपिक्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं या जो इश्यूज हैं उसको डिस्कस करें, उसको एड्रेस करें और उसको सॉल्व करें और डिसीजंस भी लें. Attendees at the meetings may include the project manager, the project team, and appropriate stakeholders involved or affected by the topics addressed. तो जो उस मीटिंग की यूजुअली उसकी जो अटेंडेंस हैं या तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स होते हैं या जो अप्रोप्रिएट या जो की स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इन्वॉल्व हैं उस टॉपिक में, वही उस मीटिंग का हिस्सा होते हैं. Again, some enterprise environmental factors
factors as inputs are, I think we have already discussed. Okay, so we have discussed, those inputs um, on slide number 20, 20 and 21. Okay, so let's discuss. Okay, sorry. Uh, Outputs. So outputs, in this particular whole process, well, one of them is deliverables. Deliverables are an approved deliverable is any unique or verifiable product, result, or capability to perform a service that must be produced to complete a process phase or project. तो deliverables is कि मैंने आपको बताया था, बार बार मैंने ये डिस्कस किया है कि जो डिलीवरेबल्स होते हैं, अप्रूव डिलीवरेबल होते हैं, वो तमाम यूनिक प्रोडक्ट्स, रिजल्ट, सर्विसेज वगैरह होते हैं जो कि आपको चाहिए और जो कि आपके कस्टमर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, उसकी मीट कर सकते हैं। ठीक है, तो और जिसके बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। So these are the deliverables that we can get at the end of execution or direct and managing the project work. Another one is the work performance information. Information for project activities is routinely collected as the project progresses. जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो है वो प्रोग्रेस कर रहा होता है, वैसे वैसे आप जो है उसकी मॉनिटरिंग, तो एज आई टोल्ड यू कि आप स्टार्ट से लेकर इन तक प्रोजेक्ट की मॉनिटर करते हैं। प्रोजेक्ट की हर एक एक्टिविटी को या हर एक फेज जो है उसको आप जो है या उसके प्रोसेस को जो है आप मॉनिटर करते हैं। हर एक एक्टिविटी और टास्क को मॉनिटर करते हैं कि क्या जो टास्क है, जो एक्टिविटीज हैं, जो फेजेस हैं या जो प्रोसेसेस हैं, वो उन स्टैंडर्ड्स और उन गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स के बेस पे परफॉर्म कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो दैट्स गुड, स्टैंडर्ड काम होगा आपका, आपकी क्वालिटी जो है वो प्रोजेक्ट या आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस या जो रिजल्ट्स हैं जो प्रोजेक्ट के रिजल्ट में बनते हैं उनकी क्वालिटी बेस्ट होगी, परफेक्ट होगा, बेस्ड ऑन द प्लान होगा। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो वो जो है नेगेटिवली इफेक्ट करेगा आपके प्रोजेक्ट को। सो दैट्स व्हाई कि उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और वो जो इंफॉर्मेशन है वो हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के जो स्टेज है उस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। This information can be related to various performance results, including but not limited to deliverable status, schedule, progress, and cost incurred. यानी जो इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट जब प्रोग्रेस करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन एज आई टोल्ड यू कि वो मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेटेड होता है, जिसमें आप फॉर एग्जांपल डिलीवरेबल स्टेटस की बात कर रहे हैं कि जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है वो किस स्टेज पे है, फाइनल स्टेज पे है, मिडिल स्टेज पे है या स्टार्टिंग स्टेज पे, इनिशिएटिंग जो इनिशियल स्टेज है उस पे है, कहाँ है, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, जो स्केड्यूल है उसको भी आप जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, या फलानी जो प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग टाइमिंग्स क्या थी, यानी जो एस्टिमेट की गई थी उसके लिए टाइमिंग्स, उन्हीं टाइमिंग्स के बेस पे ही जो है वो आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं या आप परफॉर्म कर रहे हैं या उसके आगे पीछे जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट या कोई एक्टिविटी अपने डेडलाइन से लेट तो नहीं हो रही। ठीक है, so that's why we have to collect information regarding the schedule as well। और इसी तरह कॉस्ट अगर आप देखें तो आप बजट obviously for each and every activity within a particular project you have to estimate the cost and budget। तो उस एक्टिविटी की जो कॉस्ट है, जो बजट है, वो लिमिट से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी पूरी प्रोजेक्ट जो है उसको इफेक्ट करेगा, बिकॉज डिफरेंट एक्टिविटीज विद इन ए प्रोजेक्ट आर इंटरडिपेंडेंट यूजुअली। ठीक है, सो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट किया जाता है जिसको हम वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कहते हैं, और उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पे फिर हम
सेटिस्फाई जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उससे सेटिस्फाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एक्सक्यूज मी। ओके, जो थर्ड आउटपुट है दैट इज द चेंज रिक्वेस्ट, जिसमें हमने बात भी की। When issues are found while project work is being performed, change requests are issued which may modify project policies or procedures, project scope, project cost or budget, project schedule or project quality। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इश्यूज अगर हैं तो उनकी हमें चेंज रिक्वेस्ट बनाने हैं, जो कि मैंने काफी दफा आपके साथ डिस्कस भी किया था। Other change requests cover needed preventive or corrective actions to forestall negative impact later in the project, ताकि negative impact को बाद में उसको हम reduce किया जा सके, इसलिए हम preventive और corrective action जो है वो perform करते हैं। ठीक है, request for a change can be direct or indirect, externally or internally initiated, and can be optional or legally or contractually mandated, and can include, उसमें क्या क्या हो सकते हैं रिक्वेस्ट में, या तो करेक्टिव एक्शन की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या प्रिवेंटिव एक्शन की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या जो डिफेक्ट्स हैं उनको रिपेयर करने की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या उसको अपडेट कर सकते हैं। So these are some of the forms of the change request जो कि हमने बार बार मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कस किए। Okay, other outputs from the direct and managed project work include project management plan updates and project document updates. So let's first talk about the project management plan updates. Project management plan जब आप अपडेट करते हैं तो कौन कौन से एरियाज को आप अपडेट कर सकते हैं, वो हम जरा यहाँ डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान दे मे बी अपडेटेड, इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। ठीक है, यही चीजें हैं, कम से कम ये चीजें जो है इसको हम अपडेट करते हैं यूजुअली जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को अपडेट करना चाहते हैं। या तो हम रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान को अपडेट करते हैं, या स्केड्यूल प्लान जो है उसके अपडेट करते हैं, या कॉस्ट की जो प्लान है उसको अपडेट करते हैं, या क्वालिटी के प्लान को अपडेट करते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स के प्लान को अपडेट करते हैं। इसी तरह या कम्युनिकेशन प्लान को अपडेट किया जाता है, रिस्क अगर हैं तो फिर रिस्क प्लान को अपडेट करते हैं, प्रोक्योरमेंट प्लान को, या प्रोजेक्ट बेसलाइंस को। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस चीज से रिलेटेड, अगर स्केड्यूल से रिलेटेड आपको चेंजेस करने हैं तो आप फिर स्केड्यूल प्लान को जो है उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो कॉस्ट से रिलेटेड प्लान है उसको आप अपडेट करेंगे अगर आपने कॉस्ट में चेंजेस करनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स, जो आप डॉक्यूमेंट्स जो कि आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर, तो वो क्या है? Project documents that may be updated include but are not limited to requirements documents। जो requirement documents है उसको आप अपडेट कर सकते हैं, या जो project logs हैं जिसमें आप issues और assumptions वगैरह होते हैं उसको आप अपडेट कर सकते हैं, या जो स्टेक होल्डर रजिस्टर है जिसमें स्टेक होल्डर और उनसे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है उसको आप अपडेट कर सकते हैं अगर स्टेक होल्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, और या जो रिस्क रजिस्टर होता है उस रजिस्टर को भी आप अपडेट कर सकते हैं जिसमें रिस्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और चीजें डिस्कस होती हैं। So these were the 5 outcomes of direct and managed project work process. So till now we have discussed what actually the project integration management is. What is the project charter? We have discussed inputs, tools and techniques, and outputs of how to develop the project charter process. And what is project management plan? We have already discussed inputs, tools and techniques, and outputs of the developed project management plan process. And similarly, we have discussed what actually the direct and management project work process is and their tools, inputs, tools and techniques, and outputs. So I think that's it for today. From the next lecture, we will discuss monitor and control project work process. Okay.
So I hope you will understand what I have discussed. If you have any problem, you are please very free. You can feel free to contact me or ask me any particular question using my email or my cell number. Till then, thank you.